Aminoglycosides are bactericidal as compared to rest of those protein synthesis inhibitor. तो जो दूसरे थे ना, दूसरे कौन से थे? क्लोरोफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन, वो स्टैटिक थे, ये सिडल है। और सिडल क्यों है? क्योंकि वो 3 मुख्तलिफ जगहों पे काम करता है अमीनोग्लाइकोसाइड। कौन कौन सी जगह हैं वो फिर बाद में आती हैं। सही है, पॉइंट 1। एंड that belongs to inhibition of protein synthesis that is recognized by those suffix of mycin and mycin in their official name. mycin और mycin किस बुनियाद पे है? वो सोर्स की बुनियाद पे है। सही है। जो सोर्स है वो वेरिएट करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस वाले जो हैं वो माइसिन होते हैं और दूसरे जो है मोनो स्पोर्स वाले तो वो मिसिन होते हैं। 2 major presentation for classification related to administration for their working, systemically administered for their working and topical administered. Systemic aminoglycoside include streptomycin, gentamicin, kanamycin, amikacin, and sisomycin, tobramycin, nitilmycin. And topical include neomycin, fremycetin. Those which are related to classification on basis of that source that include streptomyces and micromonospora, जैसे मैंने आपको बताया। तो जो streptomyces हैं they will have to be added with suffix of mycin and spora source micromonospora source will have to be added with mycin. तो जो mycin है तो इसका मतलब यह है कि इसको स्पोरा से लिया हुआ है और जो माइसिन है तो उसको स्ट्रेटोमाइसिस से लिया हुआ है। तो स्ट्रेटोमाइसिस कैन यूज्ड फॉर obtainance of streptomycin, neomycin, tobramycin, and perimycetin. And for microspora, we got gentamicin, amikacin, and nitilmycin. We have got some major common properties associated with aminoglycoside. All are used as sulfate salts, which are highly water soluble in solution or stable formants. They ionize in solution. They are not absorbed orally, distribute only extracellularly, do not penetrate into brain or CSF. All excrete unchanged in urine by glomerular filtration. All are bactericidal and more active at alkaline pH. They act by interfering with bacterial protein synthesis. They are active primarily against aerobic gram-negative bacilli and do not inhibit anaerobes. सही है ना? क्यों? इस वजह से कि इनको पेनेट्रेशन में वो एरोबिक सिचुएशन चाहिए तभी जाके वो पेनेट्रेट कर सकते हैं सेल में। इसी वजह से वो कहते हैं कि ये ज्यादा एक्टिव हैं एरोबिक ग्राम नेगेटिव में। तो एनोरोबिक सिचुएशन में चूंकि पेनेट्रेट नहीं कर पाते इस वजह से फिर वो इफेक्ट भी नहीं शो कर सकते। There is only partial cross resistance among them. They have relative narrow margin of safety and major toxic effect associated to autotoxicity and nephrotoxicity. तो जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हैं टेट्रासाइक्लिन वाले क्या थे? बच्चों के लिए ठीक नहीं थे, वो बोन डिफॉर्मेशन काज करते थे या सुप्रा इन्फेक्शन जीआईटी सुप्रा इन्फेक्शन काज करते थे। क्लोरम्फेनिकॉल बच्चों के लिए ठीक नहीं थे, खासकर न्यूनेट्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, और वहां पे ग्रे बेबी सिंड्रोम काज करता था। और दूसरा ये कि जो क्या कहते हैं जो टीन एज से छोटे बच्चे हैं वहां पे वो एप्लास्टिक एनीमिया और अगर एडल्ट हो तो वहां पे माइल्ड सप्रेशन काज करता था रिलेटेड टू बोन मैरो डिप्रेशन। और अमाइनोग्लाइकोसाइड नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी काज करता है। ये याद रखें भाई। Mechanism of action inside the cell, that is aminoglycoside bind to specific 30S subunit ribosomal protein.
protein synthesis is three ways include one of that interference with initiation complex of peptide formation. Initiation with peptide formation. Initiation का क्या मतलब? पहला अमीनो एसिड जो आता है वो कौन सा होता है? आमतौर पे मिथ्योनिन होता है। तो वो जो मिथ्योनिन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट को इंटरफेयर करता है, तो उसकी बुनियाद पे जब पहला अमीनो एसिड नहीं बनता तो दूसरे पेप्टाइड भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। सेकंड वे टू इंटरफेयर प्रोटीन सिंथेसिस inhibition by amino glycoside include misreading of messenger RNA which cause incorporation of incorrect amino acid into peptide resulting in non-functional or toxic protein। सही है ना? तो मैसेंजर आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसको मिसरीड कराता है। मिसरीड कैसे कराता है? तो वो नीचे डायग्राम में मैं आपको बताता हूं। तो जो अगर फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड ये है कि यूरासिल, गुआनिन और एडेनिन वाला है, इन तीन कॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन से अगर आपके पास पहला प्रोटीन आ रहा है तो वो उसको मिसरीड कराता है। जो पहला अटैचमेंट साइट पे ट्रांसफर आरएनए आ रहा होता है उस ट्रांसफर आरएनए पे एंटीकोडॉन्स होते हैं उन तीन न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, तो उन तीन के एंटीकोडॉन्स को मिसरीड कराता है, तो फिर प्रोटीन की इनिशिएशन नहीं होती और सही नहीं बनता। And third aspect for its mechanism of action related to breakup of polysomes into non-functional monosomes. Polysomes और monosomes जानते हैं ना? विषय का उदय। यस सर, जानते हैं। आप ना बताएं। ये अब्दुल्ला E45 बताएं जरा, मोनोसोम और पॉलीसोम में क्या फर्क है? ये अब्दुल्ला सो गया है? चलो, तो ये पॉलीसोम्स को मोनोसोम्स को पॉलीसोम में नहीं बनाने देता। तो मोनोसोम 30S सब यूनिट पहले होता है ना, तो उसको 50S के साथ नहीं कंबाइन करने देता। इनिशिएशन, कॉम्प्लेक्सेशन इनिशिएशन that is inhibited at protein as well as for those ribosome. These activities occur more or less simultaneously and the overall effect is irreversible and lethal for the cell. ये schematic mechanism of action है, entry of amino glycoside into bacteria, जिसे हम कहते हैं aerobic anaerobic। तो aerobic है ना, तो oxygen is required for penetration of amino glycoside into those bacterial cell. Bind to 30S subunit, तीन काम होते हैं इस बाइंडिंग के बाद। Block the initiation of protein synthesis, can misread reading of messenger RNA, incorporation of incorrect amino acid into growing peptide chain। Incorrect कैसे होगा? Incorrect amino acid कैसे वो देगा? मिसरीडिंग के थ्रू। जो सीक्वेंस जिस अमीनो एसिड का है तो वो सीक्वेंस नहीं आता, ठीक है? तो प्रोटीन तो सिर्फ पेप्टाइड का नाम नहीं है ना, रिक्वायर्ड सीक्वेंस का नाम है। रिक्वायर्ड नंबर एंड रिक्वायर्ड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट आर बीन लिंक्ड टू ईच अदर टू गिव दैट पेप्टाइड फॉर दैट प्रोटीन। तो सीक्वेंस नहीं आता तो प्रोटीन फिर ठीक नहीं बनता। अच्छा, ये होता है असल में, ये मैसेंजर आरएनए, ये जो है ये देख रहे हैं आप, ये 30S, ये ऊपर वाला जो डोम है ये 50S। अब आके आता है अमाइनो ग्लाइकोसाइड, वो आपके इधर अटैच हो जाता है। तो जो नीचे कोड है ये G फॉर गुआनिन, C फॉर साइटोसिन, ठीक है ना, A फॉर एडेनिन, U फॉर यूरासिल, C फॉर साइटोसिन। तो ये जो कोडॉन्स हैं डीएनए की तरफ से मैसेंजर पे आ रहे हैं, तो वो आपका अमीनो ग्लाइकोसाइड इसको रीड नहीं कराने देता सही। तो रीड नहीं करता तो वो जो ये ट्रांसफर आरएनए है, तो ट्रांसफर आरएनए उसको करिस्पॉन्डिंगली ठीक एंटीकोड नहीं बनाता।
तो साइटोसिन के लिए हमें पता है ना कि गॉनिन है, तो उसी तरह फिर ये जो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट न्यूक्लियोटाइड है वो नहीं आता, और उसकी बुनियाद पे फिर ये प्रोटीन सही नहीं बनते एंड डीकोडिंग सही नहीं होती। ये देखें, यूरोसिल और एडेनिन, some type of misreading is there. Kinetic of aminoglycoside, these are generally systemically administered, have similar pharmacokinetic profile. They are highly ionized and neither absorbed nor destroyed in GIT. However, absorption from injection site in muscle is rapid. Peak plasma level are attained in within 30 to 60 minutes after intramuscular. They are distributed only extracellular, so that volume of distribution is 0.3 liter per kg, is nearly equal to the extracellular fluid volume. Low concentration are attained in serous fluid like synovial or pleural or peritoneal, but these levels may be significant after repeated dosing. Relatively higher concentration are present in endolymph and renal cortex, which are responsible for ototoxicity and nephrotoxicity, respectively. Penetration and respiratory secretion is poor. Concentration in CSF and aqueous humor are non-therapeutic even in the presence of inflammation. Aminoglycoside cross placenta and can be found in fetal blood amniotic fluid. Their use during pregnancy can cause hearing loss in the offspring and must be avoided unless absolutely essential. The plasma protein binding of aminoglycoside is clinically insignificant, though streptomycin is bound to some extent. Aminoglycosides are not metabolized in body and are excreted unchanged in urine. Glomerular filtration is the main channel because tubular secretion as well as reabsorption are negligible. Plasma half-life is 2 to 4 hours. Generally, spectrum of activity belongs to gram-negative enteric bacteria, especially when the isolate may be drug resistant and when there is suspicious for that expectation for that sepsis. Aminoglycosides are almost always used in combination with beta-lactam ring. वजह बताई थी ना, हम aminoglycoside और beta-lactam को क्यों एक साथ देते हैं? क्यों एक साथ देते हैं? सर साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है सर। नहीं, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट तो है, वो तो ठीक है। नहीं, फार्माकोकाइनेटिक नहीं। फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन की वजह से साइनर्जिज्म प्रोवाइड करता है। फार्माकोडायनेमिक कैसे होता है? एमाइनोग्लाइकोसाइड प्रोटीन राइबोसोम तक पहुंचने के लिए रास्ता उसको चाहिए होता है, और रास्ता जो है वो पेनिसिलिन वो देता है। तो पेनिसिलिन जो है, जी बिल्कुल, enhanced bactericidal activity. Penicillin and cephalosporin beta-lactam antibiotics are responsible to give penetration for those aminoglycoside to enter into those bacteria cell and reach up to that ribosomal subunit. क्योंकि जब सेल वॉल रप्चर कर जाता है तो रास्ता साफ हो जाता है। Antibacterial spectrum and clinical use. Aminoglycosides are very effective against large number of gram-negative bacilli. They are also effective against Mycobacterium tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में कौन कौन से ड्रग्स हैं? कौन कौन से हैं? रिफॉर्मपिसिन, इथम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजिड और पायरोजेनामाइड। ये 4 होते हैं, है ना? ये लेकिन जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं फिर उसकी ट्रीटमेंट होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन से।
तो माइकोबैक्टीरियम के लिए अमाइनोग्लाइकोसाइड में कौन सा चॉइस है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? अमाइनोग्लाइकोसाइड है, और वो उन स्ट्रेन्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम के लिए काम करता है जहां पे ये दोनों से डला है, स्टैटिक तो इन दोनों में से एक भी नहीं है। मरियम, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड है और उन स्ट्रेन्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम के लिए इस्तेमाल होता है जो रेजिस्टेंट होते हैं टू अदर these four anti-tubercular drugs. Aminoglycosides are mostly used against gram-negative enteric bacteria, especially when the isolate may be drug resistant and when there is they are almost always used in combination with beta-lactam, as we have discussed earlier. Antibacterial spectrum in uses include streptomycin, though not DOC. Is still kept a reserve for patient of tuberculosis. In combination with oral tetracycline, it is used in brucellosis and plaque. Intramuscular aminoglycoside for systemic infection, bacterial endocarditis caused by viridans or Felis. Intramuscular or intravenous aminoglycoside is used in combination with penicillin. This increased bactericidal sensitivity, bactericidal activity, and bacterial sensitivity. Pseudomonas aeruginosa infection sepsis that is being given, that is being treated by aminoglycoside added with carbenicillin or ticarcillin. Pneumonia. In hospital-acquired pneumonia, if that is being due to Pseudomonas aeruginosa, we have to give penicillin or cephalosporin with aminoglycoside. Klebsiella, this aminoglycoside and piperacillin will have to be given. E. coli and mirabilis will have to be treated with aminoglycoside added with ampicillin. Acute UTI, aminoglycoside with cephalosporin. Severe infection, septicemia, abdominal or pelvic sepsis, aminoglycoside with penicillin. And gentamicin and streptomycin that can be used for tobramycin is alternative. And kanamycin is very toxic and reserved for resistant tuberculosis infection. Amikacin is resistant to tobramycin metabolizing by Pseudomonas. Topical neomycin and premicetin is used as ointment in solution for infection of mucous membrane of ear or eye or skin, burn wound. Neomycin is used orally to sterilize before abdominal surgery. Neomycin is used along with bacitracin to enlarge antibacterial. ये जो है ना नियोमाइसिन और बेसिट्रासिन, ये क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक भी है और क्या कहते हैं, वॉशिंग और प्रोटेक्शन के लिए भी है, प्रोफाइलेक्टिक इन्फेक्शन के लिए भी है. तो एंटीबायोटिक 3 किस्म के हैं ना, एक प्रोफाइलेक्टिक है, एक एम्पेरिकल है और एक टारगेटेड है. तो ये बेसिट्रासिन और नियोमाइसिन दोनों होते हैं, एम्पेरिकल भी है और प्रोफाइलेक्टिक भी है. Adverse effect of aminoglycoside include nephrotoxicity. Aminoglycoside are mainly excreted by glomerular filtration and can be stored in kidney. It can cause acute renal insufficiency and tuberous necrosis. Neomycin is the most nephrotoxic drug. Streptomycin is the least one. लेकिन gentamicin is most vulnerable for those patients which are either geriatric or which have got clearance value within that range, for which that can be classified for chronic kidney disease, stage 3, 4 and 5. Ototoxicity, the cranial nerve damage, cochlear and ear vestibular toxicity that is irreversible, vestibular dizziness, vertigo and ataxia,
auditory tinnitus, decrease hearing. Neomycin, kanamycin, and most ototoxic drug, streptomycin and gentamicin are most vestibulotoxic, and netilmicin is the least toxic. अच्छा जी. They also have a characteristic neuromuscular blocking and junction blockade that may take place at high dose and in combination with chloroform. Sensitivity, special attention should be paid to direct shock command. Mechanism of these include those three: production of transferase enzymes that are responsible for annihilation, acetylation, phosphorylation. This is principal resistance. There is entry command to सर जी आवाज में सही ना राजी सर जी. ये कब से खराब हुआ है? आवाज कट रही है सर थोड़ी देर पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद फ्लैट शुरू कर. ये आवाज कब से खराब हुआ है? सर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से सर अभी भी आवाज नहीं आ रही सर फिर कट रही है सर आवाज नहीं आ रही अभी आवाज भी खत्म हो गया. सर क्लास फिनिश हुई? खत्म हो क्लास.